हूबहू इंसानी डीएनए बनाना हमारे प्रोजेक्ट का काफी आसान पहला हिस्सा था। दूसरे हिस्से की बात करें तो असली पेचीदगी यहीं पर है। एक जादूगर की तरह हमने न्यूरल सिस्टम को चकमा दिया ताकि वो हमारी नैनो टेक्नोलॉजी को अपना समझे, उसे डीएनए का हिस्सा बना ले। उसके बाद इंक्यूबेशन पीरियड के दौरान नैनो टेक्नोलॉजी अपनी खुद की भाषा सामने लाने लगी, अपने खुद के निर्देश। जीव की बढ़ने की रफ्तार धीरे धीरे बढ़ने लगी। जैसे जैसे उसे नए एहसास हुए, उसके जज्बात पैदा होने लगे। हाँ, मैंने प्रोजेक्ट के बारे में पढ़ा है डॉक्टर। Education process and sort of teaching students about neuroscience, and so that in the future they may be thinking about possibly becoming a brain scientist. And so when I was a graduate student, my lab mate Tim Marzullo and myself decided that, what if we took this complex equipment that we have for studying the brain and made it simple enough and affordable enough that anyone, an amateur or a high school student, could learn and actually participate in the discovery of neuroscience. And so we did just that. A few years ago, we started a company called Backyard Brains, and we make DIY neuroscience equipment. And I brought some here tonight, and I want to do some demonstrations. You guys want to see some? All right. All right, so I need a volunteer. So right before, what is your name? All right, Sam. I'm going to record from your brain. Have you had this before? No. Okay. All right. I need you to stick out your arm for science. Roll up your sleeve a bit. All right. And so what I'm going to do, I'm putting electrodes on your arm, and you're probably wondering, I just said I'm going to record from your brain. What am I doing with your arm? You have about 80 billion neurons inside your brain right now. They're sending electrical messages back and forth and chemical messages. But some of your neurons right here in your motor cortex are going to send messages down when you move your arm like this. They're going to go down across your corpus callosum, down onto your spinal cord, your lower motor neuron, out to your muscles here. And that is electrical discharge. It's going to be picked up by these electrodes right here. And we're going to be able to listen to exactly what your brain is going to be doing. So I'm going to turn this on for a second. Have you ever heard what your brain sounds like? All right, let's turn it on. So go ahead, go ahead and squeeze your hand. All right, so what you're listening to, so this is your motor units that are happening right here. Okay, so let's take a look at it as well. So I'm going to stand over here. I'm going to open up our app here. So now I want you to squeeze. Yeah, so right here, these are the motor units that are happening from her spinal cord out to her muscle right here. And as she's doing it, you're seeing the electrical activity that's happening here. We can even click here and try to see one of them. So keep doing it really, really hard. Yeah, so now we've paused on one motor action potential that's happening right now inside of your brain. Okay. Do you guys want to see some more? All right. That's interesting, but let's get it better. Okay. I need one more volunteer. Okay. What is your name, sir? Miguel. All right. You're going to stand right here. So Miguel, when you're moving your arm like this, your brain is sending a signal down to your muscles right here. I want you to move your arm as well. All right, so your brain is going to send a signal down to your muscles. And so it turns out that there is a nerve that's right here that runs up here that innervates these three fingers. And it's close enough to the skin that we might be able to stimulate that. So that we can do is copy your brain signal that's going out to your hand and inject it into your hand so that your hand will move when your brain tells your hand to move. And so in a sense, she will take away your free will, and you will no longer have any control over this hand, okay? You with me? All right, so I just need to hook you up. All right, so I'm going to find your ulnar nerve, which is probably right around here. You don't know what you're signing up for when you come up and... So now I'm going to move away, and I'm going to plug it into our human-to-human interface over here. Okay, so Sam wants you to squeeze your hand again. All right. Do it again. All right, perfect. So now I'm going to hook you up over here so that you get this. It's going to feel a little bit weird at first. This is going to feel like a, when you lose your free will and someone else becomes your agent, it does feel a bit strange. So I want you to relax your hand. All right, and Sam, you're with me? All right, so you're going to squeeze. I'm not going to turn it on yet, so go ahead and give it a squeeze. All right. So now, are you ready, Miguel? Ready as I'll ever be. Okay, so I've turned it on. So go ahead and turn your hand. Do you feel that a little bit? No. Okay, do it again. No, a little bit. A little bit. Okay, so relax. No, hit it again. Okay. Oh, perfect, perfect. All right, so relax. Do it again. All right, so now. All right, so right now,
your brain is controlling your arm, and it's also controlling his arm. So go ahead and just do it one more time. All right, so that's perfect. So now, what would happen if I took over my control of your hand? And so just relax your hand. What happens? Nothing. Why not? Because the brain has to do it. Now you do it again. All right, that's perfect. All right, well, thank you guys for being such a good sport. This is what's happening all across the world, electrophysiology. And we're going to bring on the neural revolution. Thank you. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सिस्टम एक चैनल के लिए डिज़ाइन किया गया है। एक से ज़्यादा चैनल के लिए भी सिस्टम डिज़ाइन किए जाते हैं। इसके ज़रिए से दिमाग में न्यूरॉन के कनेक्शन को नई शक्ल दी जाती है। इसके ज़रिए से ज़हनी सलाहियतों, ख्याल और शऊर में इजाफा होता है। खुद पर काबू करने की सलाहियत पैदा होती है। इसके साथ साथ सीखने, नींद, ख्वाब देखने में भी तब्दीली होती है। लेकिन हसद करने वाले लोग इस सिस्टम को इसके रिवर्स में इस्तेमाल कर रहे हैं। आवाज में भी तब्दीली पैदा की जाती है। मेरी आवाज में भी तब्दीली पैदा की गई है। टॉर्चर करने वालों का तरीकाकार है कि टॉर्चर वेयर की हकीकत को मजीद बयान करने के लिए इनकरेज करते हैं। ऐसे लग रहा होता है कि अब की दफा तो टॉर्चर करना खत्म कर दिया जाएगा और इंसाफ मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता, बल्कि इनकी बदमाशी और बढ़ जाती है। कई सालों से टॉर्चर वेयर वाले बदमाशी कर रहे हैं। इन लोगों को डर है कि कहीं हकीकत का पता न चल जाए, लेकिन हकीकत सामने है। जैसे इस वीडियो में कंट्रोल किया जा रहा है, बिल्कुल इसी तरह ये टॉर्चर करने वाले भी कंट्रोल करते हैं। इन टॉर्चर करने वालों का शुमार इन लोगों में होता है कि जो लोग सूरज देखकर ये कहते हैं कि ये सूरज नहीं है, देखकर ये कहते हैं कि ये सूरज नहीं है। जंग शहरियों के खिलाफ जारी है, लेकिन हथियार रवायती नहीं है। दरअसल ये इस तरह दिखाई देते हैं। नस्ल का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में छुपे हुए हथियार के साथ कत्ल किया जाता है। ¿Viste en una víctima de esto? ¿Tienes algún cicatriz como prueba? No, no, no. Esta es la pregunta más frecuente. La cuestión es que hace 20 años ya habían hecho implantes a través de la nariz o en el cuello. Y ya entonces era casi imposible reconocer ningún tipo de cicatriz. Hoy en día, solo necesitan darte una inyección en la sangre. Este es el peligro de la nanotecnología, porque cuando llegan al torrente sanguíneo, pasan por diferentes tipos de frecuencias. Luego pasan por el cerebro y se adhieren a las frecuencias concretas. Así que pueden inyectar muchos miles de nanorobots a través de la sangre y es así como te conectas. El problema está también en que mucha gente cree que hay nanopartículas inteligentes en su cerebro y que les han hecho implantes de esta forma. Pero no hay ninguna marca ni ninguna prueba en el cuerpo. समझने के लिए दिमाग के न्यूरॉन्स देखें। हमारे दिमाग में बिजली इन्हीं न्यूरॉन के ऊपर से गुजरती है, और अगर हम इनको डिकोड करने में कामयाब हो जाएं, तो हमें पता लग जाएगा कि मेरे दिमाग में हवासे खमसा के ज़रिए जो मालूमात आई है वो क्या है। आँखें, कान, नाक, मुंह, हाथ हवासे खमसा हैं। डिकोड का मतलब है कि हमारे दिमाग की ज़बान को कंप्यूटर की ज़बान में तब्दील कर दें, और कंप्यूटर पर हम देख सकेंगे कि हमारी आँख ने क्या देखा, हमारे कान ने क्या सुना, हमारी नाक ने क्या सूंघा, मुंह ने क्या चखा और हाथों ने क्या छुआ। Implantando lo que ellos quieren, hacernos creer a nosotros. De su manera, ellos creo que nos implantan unas cosas
para que nosotros pensamos esas cosas, pero no es lo que nosotros tenemos que pensar de verdad. Pues no estaría bien, porque cada uno debe desarrollarse como puede. Pues no tengo ya mucho conocimiento acerca de ella, lo siento mucho. No tengo noticia de que eso sea posible hoy. Llamada la vigilancia remota neuronal, la tecnología ya en uso en Estados Unidos, en Reino Unido, España, Suecia, Alemania y Francia, le permite al gobierno ver a través de sus ojos, escuchar sus pensamientos y subir fotos y aromas a su cerebro. Aromas tan reales como si ustedes los hubieran visto y olido en la naturaleza. Ni que decir que los autores pueden oír lo que usted oye porque usted se convierte en una unidad del mainframe central. Ellos pueden cambiar su comportamiento, afectar las funciones de memoria y también las emociones. Esto no es una trama de una novela de una sociedad ficticia. Esto es real y se está llevando a cabo hoy en día, todos los días, por los gobiernos que profesan protegerle a usted de todo mal. Las emisiones electromagnéticas del cerebro pueden ser decodificadas en pensamientos actuales, imágenes y sonidos en el cerebro del sujeto. También se envían códigos complicados y señales del pulso electromagnético para activar los potenciales evocados en el interior del cerebro, generando así los sonidos y las imágenes visuales en los circuitos neuronales. Con sus sistemas de comunicación visual, del habla y auditiva, la vigilancia remota neuronal permite un enlace audiovisual del cerebro a cerebro, un enlace. इसका फ्रंट लाइन इस तरह नजर आता है। अगर आप कंप्यूटर की स्क्रीन के सामने है तो इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर आपके लिए खतरा है। वक्त तब्दील हो चुका है, बदकिस्मती से वक्त बदतर की तरफ जा रहा है। हफ्ते में हर दिन 24 घंटे मुस्तकिल निगरानी और मुख्तलिफ खुफिया तशद्दुद करने वाले हथकंडे जैसे ELF, DW माइक्रोवेव वेपन इस्तेमाल होते हैं। मजलूम पर इनके मामूल के मुताबिक तशद्दुद किया जाता है और पब्लिक में और उनके घर में जिस्मानी तौर पर मजलूम पर हमला किया जाता है और मीडिया इस मसले पर खामोश है। इस वायरलेस डे एंड एज में इस सच पर यकीन करना मुश्किल नहीं है। लाखों इस जालमाना हमले में शिकार होते हैं और दुनिया भर में अरबों इस जुल्म का शिकार होते हैं। जो टेक्नोलॉजी मौजूद है वो तमाम 5 आवाज़ पर असर कर सकती है। मुख्तलिफ फ्रीक्वेंसी से आपका विजन, हेयरिंग, सूंघना, चखना और छूने के आवाज़ पर असर किया जा सकता है। जबकि मुजरिम दूसरों को जलील करने और दर्द में मुब्तला करने को फासले से देख सकते हैं और उनको इससे लज्जत मिलती है। लाखों पर हर दिन, हर सेकंड एक ही वक्त पर सालों के लिए हमला किया जाता है और कोई भी इनको वार्न नहीं करता। इन हथियारों का इस्तेमाल दहशतगर्दों पर होता था, लेकिन इनके बजाय शहरियों पर इनका इस्तेमाल शुरू कर दिया। मुजरिम आपकी आंखों के जरिए देख सकते हैं। मुजरिमों के पास टेलीपैथिक टेक्नोलॉजी है। न्यूरोग्राम, होलोग्राम बराह रास्त ऑप्टिकल नर्व में फेंका गया और आपके विजन को ब्लॉक कर दिया गया। मजलूम के मुताबिक ये जुल्म है, गैर अखलाकी है, खैर शर से बेताल्लुक है, फासिक और बदकिरदार है। मुजरिम या साइकोट्रॉनिक वेपन वाले विक्टिम के साथ इस टेक्नोलॉजी के जरिए कनेक्ट होते हैं। विक्टिम के न्यूरॉन को नैनो टेक्नोलॉजी के साथ रिप्लेस कर दिया जाता है। रिप्लेस करने के बाद मुजरिम या साइकोट्रॉनिक वेपन वाले विक्टिम को कंट्रोल कर लेते हैं। इसके न्यूरॉन भी
मेक और ब्रेक करते हैं। जो भी विक्टिम के साथ कनेक्ट होता है वो विक्टिम से पहले प्रिडिक्ट करके बोल देता है। जो विक्टिम सोच रहा होता है उससे पहले वो प्रिडिक्ट कर लेते हैं और बोल देते हैं। इसका फ़ायदा ये होता है कि विक्टिम को समझ में नहीं आ रहा होता कि वो इन अल्फाजों को दोबारा बोले या ना बोले। ये एक तरह का तशद्दुद होता है। ये एक तरह का तशद्दुद होता है। ये न्यूरॉन को मेक और ब्रेक करके विक्टिम को बुलवाते भी हैं। इस टेक्नोलॉजी के और बहुत से फ़वाइद हैं। ये इनमें से एक फ़ायदा है जो आपके सामने लाया जा रहा है।